Yesterday we have seen the anomalous property of water. In this we have seen density of water is maximum at 4 degrees Celsius. 4 पर maximum होगा. If temperature goes down, density decreases. So we were discussing about that freezing of the lake. When the temperature drops and become 4 degrees Celsius, density of water becomes maximum. If temperature further drops, it becomes say 2 degree, 3 degree, 2 degree, 1 degree. So density will be decreasing now. Temperature that water will remain at top. It will not go down further. And if the density is more, then it goes down, and a lighter light that it when complete temperature of water becomes 4 degrees Celsius. In that case, it is maximum. Now suppose temperature is dropping further, say it is becoming 0. So it will start freezing from top because it will start freezing here and density will remain less. It will not sink. Ice will not sink inside. It will not go down. So freezing will start from top down. यहाँ पर that animal life will survive. Water life will survive here because freezing starts from top downward and goes down. अगर density suppose ice की more it will sink, then freezing will start from bottom, and all the animal life it will come to the top and may not survive. When all the water freezes, so density of ice is what is called less. It remains on top. तो टॉप से बॉटम की तरफ फ्रीजिंग स्टार्ट होती है. तो therefore and whole lake is not freezing. ऊपर से थोड़ा some thickness is there that freezes, and after that freezing stops. ठीक है. Now we are going to see further topics. Heat capacity of substance. Any idea about this? Heat capacity, or sometimes we also call it thermal capacity. Heat or thermal capacity of substance. Suppose ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है ना, इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए whatever the heat is required is called heat capacity of that substance. Simple. कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए how much heat is required, that will be the heat capacity of that substance. Now substance is increased, suppose बड़ा large quantity है, so you need the more heat to raise the temperature by 1 degree. So it will not be constant. Heat capacity of the substance will be depending upon its mass. More mass, more heat capacity, because we need more heat to raise its temperature by 1 degree. और अगर हमें temperature delta T अगर हमने बढ़ाया, if you give the heat delta Q and temperature increases by delta T, then heat capacity will be heat per unit change of temperature. ये heat capacity हो जाएगी of the substance, which is independent of the mass of the substance. Which depends upon the mass of the substance. If mass goes up, heat capacity goes up. ठीक है, तो इसको हम properly लिखेंगे. Let's write the proper definition. It's ठीक है, and formula also. Can you see it? If delta Q is the amount of heat supplied to the substance to change its temperature from T to T plus delta T, the heat capacity will be delta Q upon delta T. Unit will be joules per Kelvin. Heat per unit change, heat required, heat per unit change in temperature. It depends upon the mass. More mass means more heat capacity. Clear? If you don't want to write this, एक मिनट, इसको अगर हटाना है, if you want to keep it simple,
heat required to raise the temperature of substance by 1 degree. 1 Kelvin. Kelvin is just a unit. So this is the definition. Now, if delta Q is delta Q is the heat required. Delta Q is the heat required to change temperature by delta T, then heat capacity is given by S is equal to delta Q by delta T. Now this we can just remove because this means this only जो हमने नीचे लिखा था. ठीक है? Clear? Simple definition. It depends upon the mass. More mass means more heat capacity. All right. So इसका मतलब है कि it is not constant. There should be some constant value for each substance. हर substance की constant value होनी चाहिए. तो उसके लिए फिर दूसरी definition आ गई. Specific heat capacity, or simply we call it specific heat. It is for the specified mass. Per unit mass के लिए define करते हैं. Unit mass के लिए. That will be fixed for each substance. ठीक है. ठीक है, ये clear है यहाँ तक. Heat capacity is the ratio of heat given to the change of temperature, or we can say heat required to raise the temperature of substance by 1 Kelvin. So both this and this meaning is same. Suppose हमने heat delta Q दी, उसका temperature delta T बढ़ गया, तो 1 Kelvin के लिए क्या होगा? Divide कर देंगे तो 1 Kelvin की heat आ जाएगी. Getting or not? Now we define the specific heat capacity, or simply we call it specific heat. Symbol can be S or sometimes C also. यहाँ भी capital C हो सकता है, but we are writing NCERT book symbol. S is there. So what do you mean by specific heat capacity? It is for the specified mass. 1 kg mass के लिए कितनी heat लगेगी? 1 Kelvin temperature बढ़ाने के लिए. Suppose this is 1 kg. इसका temperature 1 Kelvin बढ़ाया. So whatever the heat is required, that will be called specific heat capacity of that substance, or simply we call it specific heat. So we will write definition. We'll see the definition. Heat required to change the temperature of unit mass by unit degree, unit Kelvin. ठीक है. देखिए, can you see? It is the heat required to change the temperature of unit mass. Heat required. फिर से लिखता हूं मैं यहाँ पर. It is heat required to change the temperature of unit mass by unit temperature. So if you need the delta Q heat, mass is M, change of temperature is delta T. तो M and delta T से divide कर देंगे. तो unit mass के लिए आएगा 1. It will be for 1 kg and 1 Kelvin के लिए आ जाएगा. ठीक है. Then it will be for 1 kg and 1 Kelvin. यूनिट इसकी स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होगी? जूल्स पर केजी पर केल्विन. ठीक है. तो दिस विल बी द यूनिट. गेटिंग और नॉट? इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा एक पॉइंट और देख लो.
एक मिनट, just a minute, let me write again. यहाँ से देखो, स्पेसिफिक हीट इज, ये देखो यहाँ से, हीट अपॉन टेम्परेचर इज व्हाट, हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट इज हीट कैपेसिटी अपॉन मास. Are you getting or not? This point is clear. Delta Q by delta T is what? यहाँ से हीट कैपेसिटी है कि नहीं? That is capital Yes, S. sir. Yes, sir. और ये स्मॉल एस है. सिंबल देखो, ये स्मॉल एस है, दिस कैपिटल एस. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें हीट कैपेसिटी, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, तो हीट कैपेसिटी कैन बी, कैन यू सी, हीट कैपेसिटी is equal to mass into specific heat, m into s. ये मास हो जाएगा, है ना, ये स्मॉल एस हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से एक फार्मूला और निकल के आएगा. देखिए, अगर हमें इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें एम एस डेल्टा टी, तो अगर हमें टोटल हीट निकालनी है, आपको अगर मास दे दिया जाए, इफ इट इज मास इज गिवन and specific heat is given and change of temperature is given, तो you can find out the total heat supplied. और कभी कभी मास एंड स्पेसिफिक हीट नहीं देंगे, दे विल गिव यू हीट कैपेसिटी. इसको हम हीट कैपेसिटी, जनरली particularly competitive examination, they don't give you the mass and specific heat separately, they give you heat capacity into change of temperature. वो आपको क्या हीट कैपेसिटी दे देंगे. तो आपको टेस्ट करने के लिए, डू यू नो द प्रॉपर फार्मूलाज, डू यू नो द, डू यू रिमेंबर द प्रॉपर डेफिनेशन? इट इज नथिंग बट ए हीट कैपेसिटी इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर. अगर आपको मास एंड स्पेसिफिक हीट सेपरेटली नहीं दी है, तो हीट कैपेसिटी दे देंगे और चेंज ऑफ टेम्परेचर दे देंगे, बोलेंगे कितनी हीट. वो तो ऑफ कोर्स यहाँ से भी दिख रहा है आपको, यहाँ से भी दिख रहा है, हीट कैपेसिटी इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर इज हीट सप्लाइड. कैन यू सी? बट जनरली वी फॉरगेट दिस, डेफिनेशन भूल जाते हैं, स्पेसिफिक हीट की याद रखते हैं, and then if the heat capacity is given, we just mess the things up. ठीक है, now समझ में आ गया आपको, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. heat capacity is for heat required to change the temperature of given mass by 1 Kelvin, and specific heat is for heat required to raise the temperature of unit mass by unit Kelvin, because it is for the specified mass, 1 unit mass के लिए ये. And if we cross multiply, delta Q is ms delta T, which is also equal to heat capacity into change of temperature. Clear? दोनों पॉइंट समझ में आ गया आपको अच्छे से? Yes, sir. So this you have to remember for definition point of view also, numerical point of view also. Most of the time we will be dealing with the specific heat, but कभी कभी आपको ये भी दे देंगे, हीट कैपेसिटी से भी टेस्ट कर सकते हैं. तो यू कैन नोट डाउन हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, जूल्स पर केल्विन. स्पेसिफिक हीट का जूल्स पर केल्विन पर केजी. Now suppose if I ask you, you are heating the water, say 10 kg water को heat कर रहे हैं by 10 degree, how much heat you need to do this? So 10 kg by 10 degree, the specific heat of water should be known, that will be given, but I recommend you to remember, sometimes may not be given, you should remember what is the specific heat of water. So let's see what is the specific heat of water. It is 1 calorie per gram per Kelvin. ये आपको लर्न हो जाएगा, तो उसको चेंज कर सकते हैं. देखो
it is 1 calorie, specific heat of water is 1 calorie per gram per Kelvin, है ना। तो 1 के अगर हम kg में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलो कैलोरी, नीचे kg हो जाएगा, ठीक है। और किलो कैलोरी इज 1000 calorie and 1 calorie is 4.2. It will be 4200 joules per kg per Kelvin. 4200 थोड़ा कम होगा, कितना था 4.186, it will be 4186 joules, और उसको राउंड फिगर में 4200 joules per Kelvin per kg, क्लियर। तो ये आपका ऐसा यूनिट हो गया, है ना। और इफ इट इज गिवन इन कैलोरी में अगर हमें कुछ कैलकुलेशन करना है तो ये यूज कर सकते हैं, या किलो कैलोरी में ये यूज कर सकते हैं। तो sometimes it is given but better to remember, this is easy to remember also because 1 calorie मतलब क्या मतलब हुआ यहाँ पे मीनिंग, if you want to raise the temperature of 1 gram of water by 1 Kelvin, you need exactly 1 calorie which is equal to 4.186 joules or roughly 4.2 joules. And yesterday we have seen the definition of calorie also. Yeah, the 1 calorie is the heat required to raise the temperature of, ये जो definition थी इसकी, 1 calorie the heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 Kelvin from 14.5 to 15.5 degrees Celsius. 1 calorie was the heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree from Celsius from 14.5 to 15.5 14.5 to yes 15.5 degrees Celsius at 1 atmosphere, है ना। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत उससे आइडिया लग रहा है 1 कैलोरी का, स्पेसिफिक हीट के यूनिट से भी हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं 1 कैलोरी इज व्हाट। In the temperature by 1 degree or 1 Kelvin, both will be same. As a unit is Kelvin. If temperature changes by 1 degree, it will be changing by 1 Kelvin. Changes are equal in Kelvin and in degree Celsius, both are equal. ठीक है, तो ये आपका वाटर की, लेट्स सी टेबल इन टेबल ऑफ द एनसीईआरटी बुक, that what are the specific heats of the substance, various substances. थोड़ा सा रफ आइडिया देखते क्या कितनी हो सकती है मेटल्स की, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मली जो हम वैल्यू लिखते हैं दे आर एट वन नॉर्मल रूम, दे आर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ प्रेशर गोज अप इट मे चेंज, ठीक है। तो यू सी वाटर इज we are written 4200 but accurate value is 4186 because 1 calorie is 4.186, so very close to 4200, whereas this metals, aluminum is nearly 900, it is 900, 1/4 of the water, and carbon again further less, कॉपर फर्दर लेस, लेड और कम है, सिल्वर भी कम है ना। तो मेटल्स की कम है काफी, है ना। टंगस्टन फर्दर लेस, आइस इज रफली हाफ, आइस की क्लोज टू हाफ, ग्लास आल्सो लेस, आयरन अगेन लेस, है ना। आयरन से अगर हम कंपेयर करें तो वाटर इज रफली हैविंग द 10 times more. So metals have got less specific heat. Now water has got very high specific heat. यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका सिग्निफिकेंस भी बताता हूँ। Water has
has very high specific heat capacity. Therefore, its temperature will rise and fall slowly. इसलिए हम लोग वाटर बैग दैट हॉट वाटर बैग यूज करते हैं फिजियोथेरेपी में, या फिर रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल, उसमें भी water used to be filled for many years. Now they fill the water plus coolant, कुछ उसमें कूलेंट मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो बिकॉज इट कैन absorb lot of heat. Specific heat is large means it can absorb large heat and it will slow down, it will cool down and its temperature will rise slowly. Sand जो होती है ना, sand has got less specific heat, therefore it will heat up fast and cool down fast. Sand की ये property होती है, तो there will be early morning wherever the sand deserts are there, तो वहाँ पर early morning it will be heated up quite fast and there will be hot, and moment the sun sets it will cool down fast and temperature drops quickly there. So this will lead to the land breeze and sea breeze. No? Yeah, it leads to the land breeze and sea breeze daytime में. In daytime sea breeze is there from sea to land, and in night it reverses the direction. So that we'll see in the heat transfer. इसी में last में heat transfer में, because of this property of that water cooling down slowly and heating slowly because of high specific heat. ठीक है? Yes, sir. Okay. So we'll see further. You don't have to learn these all tables. You can remember water ki nearly 4,200 and ice roughly half, and vapors also roughly half. Water vapors ki bhi 2,100 we can take it in numerical if it is not given. Ice का 2,100 ले सकते हैं, 2,100, and water की 210. Water vapors steam की भी it will be roughly this much only, slight plus minus 10 or 20. So most if it is not given, but it should be given. We cannot remember so many values. Now Sir, this please simple show question is yeah. ये आपका 11.37. पहले का इसके पहले एक साथ देख लीजिए, चलिए. You can see all together. एक मिनट. Done, sir. Thank you. Okay. Now using this formula, we can solve one numerical at least here. It is here. यहाँ पे देखो. Find the heat required to increase the temperature of 10 liters of water from 20 to 30. Direct question है. 10 लीटर का मास कितना होगा? 10 लीटर of water will have 10 kg mass. Will have mass 10 kg. This you have to remember. जितना लीटर होता है उतना kg होता है. For water only, not for the other liquids. उनकी फिर आपको दी होगी वॉल्यूम भी, तो मास निकाल सकते हैं. But this you have to remember as it is. The heat required is ms delta T (10) and ये आपकी 4,200 ऐसा यूनिट में. चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 10. केल्विन में भी 10 रहेगा और डिग्री सेल्सियस में भी 10. बोथ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल इन बोथ, तो we don't have to convert it into Kelvin. 420000.
4,20,000 joules. 4.2 into 10 raised to 5. Yeah. So it is 4,20,000 joules. Quite a high, but we don't come to know. Normally 10 liters water, heat karte bucket, it is bucket full of the water, heated by 10 degree, will cost you this much energy. If you heat it by, suppose it is very cold, cold में water temperature is say 10 degree, है ना? So in that case, it will be कितना आएगा यहाँ पे 22 times 8 lakh and 20,000 40,000 हो जाएगा, है ना? If you want to heat it further 10 degree to 40 degree, 3 times हो जाएगा इसका. तो that water heater, that is geyser is consuming this much energy for 10 degree change. For 30 degree change, it will be 3 times more than 1 millionth of joule. It will be using for one bucket full of water to raise the temperature by 30 degree. 1.2 million joules, or even 1.26 million joules. Got it? So quite a high value of joules is required. Joules in terms of day-to-day life, it is not the big value of heat. Even if it is SI unit, but we consume millions of joules per day in cooking and heating the water and so many in electricity also. So many millions of joules of energy we consume it per day, per person, we can say. All right. Shall we see further? Now, suppose Yes, if I sir. ask you, you have the 10 kg of ice. 10 kg of ice, and उसको आपको say 20 degree water में convert करना है. That's what they do. The people living in the Leh and Ladakh, उनका daily यही काम है आजकल. वहाँ पे there is no water. They collect the ice and melt it and make it water, and they do the daily day-to-day activity. वहाँ पे पानी ऐसे flowing water नहीं मिलता अभी. Moment that this month come, December, January, February, March, so it is full of ice only. So they have to make it water daily. Collect the ice and melt it and make the water for daily uses like that. तो ice को अगर हमें 20 degree या 30 degree पर water में बनाना है, then what to do? How much heat will be required? तो उसके लिए हमें अभी हमने ये तो हम specific heat सीखी. उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा हमें? What we have to learn? Latent What heat. we have to learn? Yeah, we have to learn about the latent heat. Latent heat सीखने से पहले थोड़ा सा हम extra point सीख लेते हैं. For example, okay, this is the question. One more question related to the specific heat. Can you read it and tell me the answer? Can you type? Can you? Certain amount of heat Q will warm 1 kg of material A by 3 degrees Celsius, 1 kg of material B by 4 degrees Celsius. Which material has greater specific heat? दोनों को heat same दी है ना. Heat given to A is equal to heat given to B. दोनों को same है, Q heat दी है. Both are having equal heat. So heat is equal to M1 S1 delta T. Sir, so the one which has less temperature will have greater specific heat. So A. Yes. So mass is same है ना. Mass भी same है, change of temperature भी नहीं, change of temperature different है. तो mass को हमें m ही लिखते हैं और ये m S2 delta T. So mass getting cancelled now. Specific heat of this A is S1, उसका temperature 3 है और specific heat of उसकी S2 इसका temperature 4 है. तो रेशियो देखते हैं. S1 by S2 is 4:1.
तो 1 की स्पेसिफिक हीट, सॉरी 4:3, 4:3, तो 1 has got more, है ना, therefore S1 is greater than S2. Heat of A is greater than specific heat of A is greater than specific heat of B. तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर, ऑफ कोर्स हमने बोला था कि slowly rise and slowly fall, but it will also, for same changes, same heat given to the same mass, it will, temperature will be raising less. मास सेम है देखो और हीट गिवन सेम है, तो इसका टेम्परेचर 3 डिग्री राइज हो रहा है, तो बिकॉज इट स्पेसिफिक हीट इज मोर, देखो प्रोडक्ट इक्वल है, यहाँ पे 3 S1 into 3 S2 into 4, है ना, तो यहाँ से प्रोडक्ट इक्वल है, इसका मतलब S1 हैज टू बी लेस, सॉरी हाँ, इट हैज टू बी, एक मिनट, S1 सॉरी ये 3 है ये 4 है, तो S1 हैज टू बी मोर, देन ओनली प्रोडक्ट विल बी इक्वल, या फिर यहाँ से देखो ना, दिस इज बेटर कंक्लूजन, यहाँ से डोंट सी है, रेशियो से कंक्लूजन इज इजी, गॉट इट? That means more specific heat means temperature rise also for same heat given, condition same heat given, है ना, क्लियर यहाँ तक? ओके Yes, sir. ओके, तो ask you one more question, चलो यहाँ पे एक और पूछता हूँ मैं, ये जो स्पेसिफिक हीट होती है, दे आर इन केल्विन और इन डिग्री सेल्सियस, है ना, वाटर की कितनी है, वाटर की इन केल्विन एंड इन डिग्री सेल्सियस इट इज 1 calorie per gram per Kelvin or per degree Celsius. But in case of Fahrenheit, degree Fahrenheit, specific heat of water will be more or less. इसमें तो 1 है पर ग्राम, अगर हम 1 कैलोरी पर ग्राम है ना, what about in this scale, Fahrenheit scale, it will be more or less? In Fahrenheit, it will be more. It will not be more, it will be less. Why? Because इस क्या डेफिनेशन क्या है कि heat required to raise the temperature by 1 degree, है ना, ऑफ यूनिट मास, इसका डिग्री छोटा है ना, इसका, इसमें वी आर सीन टेम्परेचर स्केल्स याद है आपको, इसमें फारेनहाइट स्केल में 180 डिवीजन्स होते हैं एंड डिग्री सेल्सियस में 100 डिवीजन्स है, इसका डिवीजन छोटा होगा, है ना, इसका डिवीजन छोटा है फारेनहाइट स्केल का, तो उसका 1 डिग्री राइज करना है, 1 डिग्री फारेनहाइट राइज करना है, तो कम हीट विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज इसके डिवीजन जो है दे आर स्मॉलर, रफली हाफ, इसके 100 डिवीजन्स है आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट के बीच में, इसमें 180 डिवीजन है, लगभग 200 समझ लो, तो it will be specific in the degree Fahrenheit will be less in case of water, 1 calorie से कम आएगी, but we don't define in that, we define in Kelvin or we define in degree Celsius because both have got equal divisions, change will be equal, है ना, तो Fahrenheit में कम आएगी specific heat, but we don't define. Now I think we have to restart the meeting. Can we? Then we'll see after the break. We will see principle of calorimetry. I am restarting because time is almost over. Okay? Can we join again?